Yes. So good evening. जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा है, everyone good evening. जो भी बाद में स्ट्रीम देख रहा है, the recorded video, good morning, good afternoon, or good evening. जिस भी समय you are watching the video. Today we are going to start with the 11th standard accounts revision class. Okay. So we are going to start with this, which will be for around 22 weeks. 2 weeks tak chalega. We'll discuss what are topics we are going to cover over the period of 2 weeks. Okay. Before that, I would just like to tell you, if you have got any doubts, you just put that in the chat section. And abhi awaaz aa rahi hai properly. If you are able to hear properly, just put hi in the chat section. So I'll know that my audio is coming properly. Audio, video, the screen is coming, everything I'm writing. If it's right, just put hi and okay there. All right then. So I can see you can hear properly. Quickly, let's go through all the topics from 11th division we are going to cover over the period of coming 2 weeks. So when you get some transactions in business, पहली चीज हम क्या करते हैं? First thing we do is pass a journal entry, right? Accounting का flow देख रहे हैं. First we are going to pass journal entry. Then second thing we do, we post these journal entries in the ledgers. Yeah, everything we are going to do in detailed. Now just take the topics down. Second, ledger posting. Then out of this ledger, we go for trial balance. That's the third stage. And with this trial balance, we go for preparing financial statements, right? So this is going to be the broad and the most important part of our discussion, and the revision series will be this: journal entries, ledger posting. Uske baad we'll learn how trial balance is prepared, and after that financial statements. Financial statements, namely balance sheet, and profit and loss statement, or we can say profit and loss account. Okay, and along with these topics, we will also be covering an important topic which will be definitely useful in the next academic year, will be depreciation. Perfect. And obviously in sabke saath, and we'll start today with the basic concepts. We'll understand some basic concepts. These basic concepts we will be using over the period of next 2 weeks. Okay. So you can just have this screenshot taken, and also simultaneously keep the chat active. If you are able to hear properly or okay, you just keep answering. So sort of it will be a two-way session. So once
this is taken. Let's quickly start with the today's session, जहां पे हम देखेंगे basic concepts. Not all, but definitely जो concepts हमें over the period of 2 weeks cover करने हैं, उतने हम cover करेंगे. ठीक है आज. Okay, so the first concept for today will be capital. Capital क्या होता है? Whenever we start business, okay, we start any kind of business, we need some money, obviously, to start the business. Might be to procure a building. Okay, we have to purchase land, we have to build a building. We'll need that fund for that. We'll need more funds for procuring goods and services. If we have to purchase goods, we have to purchase services. For every day-to-day transactions, we are going to need money. That money put in, this is our business, right? This is our business and this is our businessman. जो भी बिजनेस करने वाला है बिजनेसमैन. सो जो भी पैसा ये बिजनेसमैन बिजनेस में डालने वाला है उसको हम कहते हैं कैपिटल. Okay, for this we'll need to understand very basic concept, though it is a proprietorship. Okay, normally कैसे होता है? You see a normal किराना शॉप, वही अकेला बंदा होता है जिसका वो शॉप है. इट्स नॉट अ पार्टनरशिप. Okay, not a company जो कि multiple people, owned by multiple people. No, even if it is owned by single person, still we use a rule where a business and a businessman both will be treated as a separate different persons. So this is very important. Capital introduced by person in business that will be payable by business to businessman in any coming time. Okay, so suppose we say 1 lakh is introduced as a capital by this XYZ. So let's call Mr. X. Mr. X ने business में पैसा डाला है. This 1 lakh will always be shown payable to Mr. X by business. यहाँ पे कोई relation that this is only sole proprietorship. No, nothing will be mattering, because always you have to understand business and businessman are totally two different entities. Second will be drawings. Now we saw businessman has invested some money in business, so we say 1 lakh here. But at times businessman might need that money back, right? So suppose this person in coming time withdraws say 25,000. Okay, he's withdrawing from business some money. This money, this concept, this 25,000 withdrawal, we'll call it as drawings. Simply, capital, money invested into the business. Drawings, money taken out of the business. Clear? Next concept, debtors and creditors. ठीक है? Business setup हो गया? Perfectly fine. Now our business, will name it as say X Limited. Okay. Now X Limited purchases something from say a different supplier, or we just say we'll make a person here. Okay, we'll call it him as seller. Yes, seller. We are going to purchase some things. It might be goods or services on credit basis. Credit matlab kya? Can someone write in the chat? What do you mean by credit transaction? Might be credit purchase or credit sales. What do you mean by that? A simple explanation or translation also would do. What do you mean by credit transaction? When you say we have purchased it on a credit basis, we say मराठी मध्ये आपण म्हणतो उधारी. उधारीवरती घेतलं, right? So for X Limited, this seller now will be called as creditor.
Okay. For X Limited, this seller now will be called as creditor, which means, let's look at this definition now. A person to whom business has to pay for getting goods or services on credit. सही है? So ये हो गया creditor. Next, look at the concept of debtor now. Okay. Slightly, or we say exactly opposite concept now. अभी क्या हो गया? We purchased something from a seller. Now we sell these goods or services to our customer. ठीक है? Customer बोले will pay you after 30 days or 45 days, whatever be the credit period. Now you have to receive this money from him. सही है? Now once you sell on credit, udhari varti vikla varti, once you sell on credit basis, this customer in your books now will be called as a debtor. सही जा रहा है? You getting? क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिनसे हमने क्रेडिट पे या फिर उधारी पे माल परचेस किया है. डेटर किसको बोलते हैं? जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स और सर्विसेज सेल किए. क्लियर? बहुत बढ़िया. Keep on giving me this confirmation in the chat. Now with this debtor concept, we'll have these bad debts related. Okay. Debtor we can also say as debts. Okay, normal. Now suppose you have sold him goods worth 50,000. क्या किया तुमने? 50,000 के goods sell किए. कल जाके this person says that night I won't pay you. ठीक है? He says I won't pay you. Now अभी तक तो ये good debts थे ना? You are expecting this 50,000 to be back, right? But now once he says I won't pay you, and you also say अब मैं क्या करूंगा इससे झगड़ा करके, I don't want to file any complaint or anything. I accept that he won't pay. Now suddenly after he says death naisa, these good debts will turn into bad debts. क्या हो गया तुम्हारा? तुम्हारा हो गया खर्चा. समझ रहे हो? So we saw this concept of debtor, creditor and bad debts. Bad debts, an irrecoverable amount from a debtor. Irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. Okay? It's a revenue loss to the business. It's a loss. Okay? Let's look at the next concept, which is expenditure. Expenditure. Okay? क्या देख रहे हैं हम? Expenditure. We'll be looking it from both point of view. पहले हम एक example लेके देखेंगे हर एक concept, and उसके बाद we'll look at the dictionary meaning or the meaning which is given in the textbook. So what do you mean by expenditure? Any amount spent. ठीक है? Business चलाने के लिए you will always need goods या फिर services, right? You need to purchase. क्या क्या services, goods I can understand. You will purchase some raw material. अगर तुम manufacturing में हो, you will purchase some raw material. That's fine. Tell me what kind of services you might need in business. What kind of services you might need? चलो, I'm waiting for the chat section now. What kind of services you might need day-to-day business में? चलो 8-9 people watching. Tell me what kind of services you would need in business. Yes, Siddesh, Jignesh. I'm waiting for 10 seconds. What kind of services? Transportation, perfect. You purchase some goods, इसको तुम्हारे business entity तक लाने के लिए you will need services of transport, network, बहुत बढ़िया, internet, telephone,
you might need some repairs and maintenance, बहुत सारी. Atharva, yes, transportation. So basically, all these goods you purchase, all these services you procure, iske liye you need to pay some money, and that money is simply called as expenditure. Normally we use this day-to-day life. Yes, ketki warehousing. So yeah, you need to store those goods somewhere. You might have taken a warehouse on rent. Perfect. So all these expenditures, all this money spent will be named as expenditure. ठीक है? अभी ये expenditure को हमें bifurcate करना है. Okay, we need to bifurcate this expenditure into two parts. One will be called as revenue expenditure and another will be called as capital expenditure. Okay, one will be called as revenue, one will be called as capital. And ये समझने के लिए we will have to understand the concept called accounting year. Or we also called it as financial or fiscal year. चलो quickly tell me क्या होता है इंडिया में we follow which accounting year? Yes, in India, which dates starting from and ending with we follow as financial year? चलो keep the chat flowing. 1st April to 31st March. बहुत बढ़िया. 1st April to 31st March, this will be our financial year. ठीक है? Any services or okay, any services you procure, जो you're gonna procure and उसकी जो validity है वो भी इसी financial year में खत्म होने वाली है. Okay? You procure and its validity both are in same financial year. Same financial year मतलब क्या? For example, we'll take 1st April 2020 to 31st March 21. This will be our financial year. Suppose you purchase some service in January, payment किया January में, and इसका benefit भी आपने ले लिया January में. Okay? Main क्या है? Month important नहीं है. 2020-21 ये year important है. If you purchase that service in the same year, you use that service in the same year, we will call this as a revenue expenditure. समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? You are purchasing in the same year, a same financial year, utilizing in the same financial year. समझ रहे हो? We will call it as revenue expenditure. Okay. Let's look at the capital expenditure now. I'll give you an example. You purchase a motor vehicle. Oh, you purchase a car for business. Okay. Let me try drawing a car. Meanwhile, you'll tell me कि इसका यूज हम एक फाइनेंशियल ईयर में करके छोड़ देने वाले और या फिर हम लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करने वाले. Yes, tell me. I know this is not how car looks, but still I'll draw it this way. ये एक साल में you purchase in 2021 एक कार, फिर इसको स्क्रैप करके अगले साल में अगली फ्रेश कार परचेस करते हो क्या? No, absolutely. Even Ambani won't do that. So in that case, if you're going to utilize that car for multiple years, okay, in that case we will call this as capital expenditure. समझ रहे हो? We will call this as capital expenditure because this is not a day-to-day kind of expenses. See, ये जो हमने example यहाँ पे लिए थे, कहाँ पे? Revenue में. These are all day-to-day expenses, right? Electricity day-to-day expense होता है. Transportation, internet, everything is day-to-day expenses. You incur it on a daily basis. But these expenditures
such as car, building, machinery, you don't incur those on day-to-day basis. इसको एक बार purchase करके, एक बार incur करके, you use it for a longer period. That's why we call it as capital expenditure. समझ रहे हो? यहाँ पे let's look at the definition. This expenditure is incurred to acquire a fixed asset. Okay, fixed asset. Asset की concept देखने वाले हैं. So right now, don't go into that. Fixed asset or increased value of fixed asset. It gives benefit for a long period of time. And also it's a non-recurring expenses. You don't purchase car on a day-to-day basis. It's a non-recurring expense. That's what we call as capital expense. Revenue expense किसको बोलते हैं? From no future benefit is expected. Do you expect a future benefit from a revenue expense? मतलब you pay suppose $1,000 for internet services 1 month. You won't expect benefits for next 1 year. समझ रहे हो? You are going to expect this only for next 30 days. So क्या देख रहे हैं हम? No future benefit expected or having only in the immediate or short term benefit, maybe less than 1 year. ये important है, less than 1 year. अगर 1 year cross होता है, then we bifurcate and we call it a deferred revenue expenses. वो भी देखेंगे हम, ठीक है? It does not incur profit. Okay. So what we are looking at deferred now. For example, you pay internet expenses for 2 years in advance. समझ रहे हो? 2 साल के लिए एक बार ही पेमेंट किया तुमने. Suppose you pay 24,000. इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, विच इज वी से 2021 के लिए कितना लगेगा एंड 21-22 के लिए कितना बाइफरकेट करेंगे. हमने 1 अप्रैल को पेमेंट किया. टेल मी द अमाउंट. 2021 में हम आउट ऑफ 24,000 कितना हमें करंट ईयर में यूटिलाइज करना है, कितना हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज करेंगे. गिव मी द अमाउंट. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. 20-21 में 12 और 12. बहुत बढ़िया. 24,000 क्या है, मतलब हर महीने में एक हजार होगा. सो दिस 12,000 हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर का मेरा खर्चा 12,000 ही है. बाकी बचा हुआ 12,000 मेरा अगले साल का खर्चा है. ये हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेंगे. इसको हम करंट ईयर का खर्चा मानेंगे ही नहीं. इसको हम मानेंगे अगले साल का खर्चा, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वी बेसिकली डेफरिंग द एक्सपेंडिचर. जो भी कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which will be written off as expenditure over number of years. Okay, so far going good? Give me a thumbs up if going good in the chat section, and we'll continue in the same way. I can notice that my video is वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, but I'll make that correction in the next live stream. Now so far is it going good? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अंग्रेजी और हिंदी समझ रहा है ना? कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं लग रही ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू. अगला कंसेप्ट देखना है डिस्काउंट. शॉपिंग करते वक्त जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं इज कॉल्ड डिस्काउंट. जब हम लेते तब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम देते हैं डिस्काउंट तो बुरा लगता है. बुरा इस चीज के लिए भी लगता है क्योंकि हमें बाइफर्केशन करके 2 कंसेप्ट भी सीखने पड़ते हैं. ओके, सो वन डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, अनदर डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. ओके, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. क्या होगा डिस्काउंट मतलब? सपोज योर एमआरपी इज $100, 100 rupees, and your customer says
कि मुझे 10% डिस्काउंट, देन यू ऑल्सो अप्रूव. यू सेड 10, यू रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस एंड यू पे मी 90. समझ रहे हो? डिस्काउंट हो गया 10 रुपए का. अभी डिस्काउंट में दो अलग अलग तरीके के डिस्काउंट क्यों सीखने हैं. अगर ये 10 रुपीज का डिस्काउंट यू गिव एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, मतलब क्या, वो बंदा आया, ठीक है, चल के स्टोर में आया एंड यू सोल्ड गुड्स एंड रेज्ड इनवॉइस. इनवॉइस के टाइम पे यू गिव दैट डिस्काउंट एंड तुम्हारे इनवॉइस में भी लिख के आता है दिस इज योर इनवॉइस. इसमें यू से 100 माइनस 10, 90 रुपए, डन. ओके, जो डिस्काउंट तुमने ट्रांजैक्शन के टाइम पे दिया है हम उसको क्या कहेंगे, विल कॉल दिस डिस्काउंट एज ट्रेड डिस्काउंट. समझ रहे हो? दिस डिस्काउंट विल बी कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. बट अगर तुमने ट्रांजैक्शन करते टाइम ये 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया था, ट्रांजैक्शन करते टाइम तुमने इनवॉइस शो का ही किया था, लेकिन बाद में वो बंदा जब पेमेंट करने को आया तब उसने डिस्काउंट मांगा, ठीक है. सपोज यू गेव हिम अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days and he agrees to pay you after 20 days. You say 10. Okay, Om is saying example of Shivanjali. Those who are in the regular 11th class will understand this example. So you give credit period of 30 days. Credit period मतलब क्या, you basically से 30 दिन में कभी भी पेमेंट करो चल जाएगा. But that person pays you 10 days advance and you say okay, very good. Now as you have paid me earlier, I will give you discount of say 5 rupees and you only pay me 95. समझ रहे हो? दोनों में फर्क देखो. पहला वाला डिस्काउंट हमने इनवॉइस में लगाया था, उसको हमने कहा था ट्रेड डिस्काउंट. सेकंड हमने पेमेंट के टाइम पे लगाया था, उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट. समझ रहे हो? पहला जो ट्रेड डिस्काउंट था हमने कब लगाया था, हमने वो डिस्काउंट लगाया था एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग ओनली, तो उसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट. दूसरा डिस्काउंट था कैश डिस्काउंट, वो हमने एट द टाइम ऑफ पेमेंट लगाया और हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट दिया है. नाउ वन में आस्क व्हाई टू बाइफरकेट. डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, पैसे तो कम आने वाले, दर तो उतना ही होगा, तो दो दो नाम क्यों? तो उसको दो नाम इसलिए है क्योंकि हम इसके ट्रीटमेंट अलग देने वाले अकाउंटिंग में. फर्स्ट केस में यू हैड इनवॉइस्ड हिम फॉर 90, तो व्हेनेवर यू बुक सेल्स इन योर बुक, सेल्स कितने के बुक होंगे, सेल्स 100 रुपए के बुक नहीं होंगे, सेल्स बस 90 के ही बुक होंगे. समझ रहे हो? यू वोंट से 10 रुपीज 100 रुपीज सेल्स माइनस 10 रुपीज डिस्काउंट. नो, ये ऐसा वाला ट्रीटमेंट नहीं चलेगा. इनवॉइस के टाइम पे 10 का डिस्काउंट दिया है, नेट इनवॉइस 90 का है, तो हम सेल्स बुक करेंगे 90 का. और कैश डिस्काउंट, सेल के टाइम पे पता था क्या डिस्काउंट देने वाले हैं, 10 का देंगे, 5 का देंगे, 15 का देंगे, नहीं पता था. तो सेल इस टाइम पे बुक कितना होगा, कैश डिस्काउंट के केस में पूरे के पूरे 100 का सेल्स बुक होगा. जब हम डिस्काउंट देंगे तब हम एक्सपेंडिचर बुक करेंगे डिस्काउंट का सेपरेटली, विच विल बी 5 रुपीज. समझ रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले केस में क्या हो रहा है, यू आर बुकिंग सेल्स ऑफ 90, बुकिंग के टाइम पे 90 का सेल बुक कर रहे हो. लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, यू आर बुकिंग सेल्स ऑफ $100 एंड गिविंग डिस्काउंट ऑफ 5, जिसका एक्सपेंडिचर अलग से बुक होगा. हमने यहाँ पे 10 का एक्सपेंडिचर बुक नहीं किया है, हमने ऑलरेडी सेल्स ही कम से बुक किया है. तो ये ट्रीटमेंट ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू रीड सच थिंग्स एज डिस्काउंट. सो चेक आउट इफ इट इज कैश डिस्काउंट बुक होगा, ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट बुक नहीं होगा. इसका एग्जाम्पल दिया है बुक में. आज जब सेशन होगा you read these basic concepts, जो हमने नहीं किए वो भी रीड करो. and if you have got any doubts, write that in the comment section. I'll cover those in the next live streams. accounting year का हमने देख लिया अभी. now let's look at this concept of profit and loss. बहुत easy concept है, you must know already. Suppose you purchase some goods at 10,000 and you sell these at 15,000. Tell me quickly,
प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? एंड टेल मी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. टेल मी साइमल्टेनियसली इन द कमेंट. एक ही कमेंट में लिख के दो. इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? ओके, एंड ऑल्सो टेल मी द अमाउंट. प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, तुमने प्रॉफिट अर्न किया है, एंड अमाउंट विल बी 5,000, दैट इज 15,000 माइनस 10. बहुत ही बढ़िया. तो क्या करते हैं हम? वी बेसिकली, मैं क्विकली ना, आई विल आल्सो टेल यू द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज अ very vague format. Okay, you write all your income on the right side, which is also called as credit side. You write all expenses on the left side, which is also called as debit side. तुम ये सारे यहाँ पे लिख लेते हो. income, you write all expenditure and you weigh these things. For example, यहाँ पे expenditure तुम्हारे टोटल 10,000 के हुए, income 15 के, you have earned profit of 5,000. बहुत ही बढ़िया. Now loss. Let's take another example. Obviously, 10,000 में तुमने परचेस किया, but due to some issues, you sold it at 8,000. तो हमें हो गया लॉस, और लॉस की अमाउंट होगी 2,000. समझ रहे हो? So profit loss, another easy concept which we covered. हमने ऊपर देखा था एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर के अपोजिट में क्या होगा? एक्सपेंडिचर के अपोजिट में होगा इनकम या फिर रेवेन्यू. दोनों सिमिलर कंसेप्ट है. ओके, इनकम एंड रेवेन्यू बोथ आर सिमिलर कंसेप्ट. छोटा बाइफर्केशन. ओके, वो हम देखेंगे, क्विकली में देख लेंगे. इनकम भी है, रेवेन्यू भी है. डे टू डे ट्रांजैक्शन, सपोज तुम्हारा बिजनेस है गुड्स सेल करने का. गुड्स सेल करके जो भी पैसे आते हैं, whatever income basically you earn, हम उसको क्या कहते हैं? We specifically call it as revenue. Whatever receipts or whatever earning you do out of selling goods or services, we call it as revenue. Revenue क्यों बोलते हैं? Because these are day to day transaction. We call it as revenue. But suppose you have made some FD in the bank, ठीक है, या फिर you have purchased some shares of companies, एंड ये एफडी के अगेंस्ट में मिलता है इंटरेस्ट, और शेयर्स पे मिल जाता है डिविडेंड. इसको हम कहते हैं इनकम. दिस इज ऑल्सो यूर अर्निंग. ओके, दिस इज ऑल्सो यूर अर्निंग्स. बट यू usually companies don't depend on this interest, they don't depend on this dividend, so these are called income. एंड जो डे टू डे डिपेंडिंग वाला इनकम है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू. बाइफर्केशन है कंसेप्ट में, बाकी कुछ नहीं. दोनों अर्निंग ही है, पैसा आने वाला ही है, बट बाइफर्केशन क्या है? रेवेन्यू है, विच आर डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे सेलिंग ऑफ गुड्स, डे टू डे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. ये होता है रेवेन्यू. और इनकम बनेगा जो भी है तुम्हारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी साइड वाला इनकम बोल सकते हो, साइड वाला इनकम. समझ रहे हो? आगे ये बहुत उम्दी कंसेप्ट है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एसेट एंड लायबिलिटी. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. कुछ डाउट है तो फट से कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, आई विल एड्रेस दैट. क्या कंसेप्ट देख रहे हैं हम? एसेट. फर्स्ट आई विल, मतलब वो एक डेफिनेशन में जाने से पहले विल लुक एट द एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ एसेट. ओके, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था कार का, ठीक है. उसके बाद हो सकता है तुमने बिल्डिंग खरीद ली हो या फिर बांध ली हो खुद से, या फिर तुमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी. ये सारे जो तुम्हारे एसेट्स के एग्जाम्पल जो है, उसमें एक ध्यान से कंसेप्ट देखो. ये कार हो या ये बिल्डिंग हो या फिर ये प्लांट एंड मशीनरी हो, ये एक फाइनेंशियल ईयर में परचेस करके तुम बेच नहीं देते हो या फिर स्क्रैप आउट नहीं करते हो. यू यूज दिस what I would say things to provide goods and services. करेक्ट? ये बिल्डिंग में तुम क्या करते होंगे? फैक्ट्री बनाई होगी. प्लांट एंड मशीनरी यू यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. दो चीजें, फर्स्ट इज फॉर अ लॉन्गर टर्म,
and second you use this to provide goods या फिर services. समझ रहे हो? इनको हम क्या कहेंगे? Assets. बारीकी है इसमें. This must not be rented. ये rented रहेगा तो expenditure ही बनेगा ना, ये asset नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये rent पे नहीं चाहिए. ये this should be owned by the business. Ownership किसकी होनी चाहिए? Business की ownership होनी चाहिए. It should be used over a period of longer term. It should be used in provision of goods and services. Car must be used by some employees या फिर से directors. ठीक है, to commute between their home and business places. समझ रहे हो? So example, I hope you have understood. Let's look at the definition. Any physical thing, car, building, everything is physical, or a right owned. Right, ठीक है, हक्क हम क्या बोलते हैं इसको मराठी में आपण लावतो हक्क. That owned by the business that has monetary value. बहुत ही important है, which has got monetary value. अगर anything you are getting for free, it does not have monetary value, you won't call it as asset. There has to be monetary value. Any physical thing or right, any what can be हक्क, what can be rights. You suppose अभी हाँ हमने ऊपर इंटरनेट सर्विसेज का पेमेंट किया था, 2 साल का साथ में पेमेंट किया था. Now you own this right to get services over the period of 2 years. So इसको हम क्या कहेंगे? We'll call it as asset because you own this right to receive services for a future period. This will be another example of rights. Example क्या देखो, land, goodwill will come to later on. Patent, you have got some technology created, उसका patent लिया, that is also your asset. You say computer, these are all your assets. इसको इस भी तरीके से याद रख सकते हो. Anything which will lead to future inflows. आगे जाके बिजनेस में इनफ्लो आने वाले हैं. ये इनफ्लो कैन बी इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर इट कैन बी इनफ्लोज ऑफ रुपीज. दैट मींस मॉनेटरी बेनिफिट्स. इनफ्लोज होने वाले बिजनेस में नेम इट एज एसेट. लेकिन इनफ्लो कौन से? जो करंट फाइनेंशियल ईयर के आगे में आने वाले. समझ रहे हो? करंट फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 31 मार्च को खत्म होगा, इसके आगे जो भी तुम्हें इनफ्लो होने वाले है तुम इसको क्या बोलोगे? You will call it as asset. इनफ्लो कोई भी गुड्स सर्विसेज के इनफ्लो है, अभी इंटरनेट सर्विसेज थे उसके इनफ्लो को भी हमने एसेट बोला. या फिर करेंसी आने वाली है, करेंसी कौन सी आ गई? डेटर. डेटर्स आगे जाके पैसा देंगे, दैट इज ऑल्सो एसेट. क्लियर? अगर कुछ डाउट हो एसेट्स में, आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds और विल गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज लायबिलिटी. We'll be closing this live stream in another say 10 odd minutes. So you can take this as a booster time. So give me answers. Okay with the assets concept? कोई दिक्कत है assets समझने में? अगर assets में okay है, कोई दिक्कत नहीं है तो we'll go to liabilities, tweak away, and after this session, after this concept, we'll probably end with the stream. Okay, fine. So we are okay with the assets. Liabilities on the other hand is exactly the opposite. ठीक है, अभी हमने assets में क्या देखा था? Assets में हमने क्या देखा था? We are going to have some inflows in future, right? We have to have some inflows which might be inflows of goods and services or it might be monetary inflows. समझ रहे हो? Liability में क्या होगा? Liability में any amount is now payable by you, payable by the business entity to other persons. So this payable might be amount, payable also can be goods or services. समझ लो?
फक्त पैसे द्यायचे, सिर्फ पैसा पे करना इसलिए आउटफ्लो है क्या? नहीं, यू माइट हैव टू प्रोवाइड सम गुड्स एंड सर्विसेज, यू माइट हैव रिसीव्ड मनी इन एडवांस, दैट इज योर लायबिलिटी. क्विकली इसमें क्या हो सकता है? लेट्स लुक एट एग्जांपल एंड देन विल गो टू द डेफिनेशन. दिस माइट बी क्रेडिटर्स, उधारी पे खरीदा है ना, उसको पे तो करना पड़ेगा. These are your future liabilities, future payable amount, इसको हम क्या कहेंगे? Liability. और सपोज बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कम पड़ी, सो तुमने बैंक में जाके लोन लिया. ओके, अनलेस यू आर Nirav Modi or you are Malia, you will regularly have an intention of paying the loan, right? So this amount, including interest out of on that loan, will be what? Payable. Amount payable by you to bank in future. So इसको भी हम क्या कहेंगे? We'll call it as liability. समझ रहे हो? So this is specifically liability. Let's quickly look at this definition. Amount payable by business. क्या ये? Amount payable by business to others is known by liability. Simply. क्या example है देखो? Loan taken, creditors, bank overdraft, bank overdraft. I think you know what is bank overdraft, but still I'll tell you quickly. An outstanding expense. Outstanding expense मतलब क्या? You have incurred some expenditure. Service ली तुमने. मार्च में तुमने इंटरनेट सर्विसेज ली, लेकिन पेमेंट नहीं किया, मई में करोगे, तो 31 मार्च में साल तो खत्म होगा. 31 मार्च को इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये बनेगी तुम्हारी लायबिलिटी. ठीक है, लेट मी गो विद द बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या होता है? वंस यू हैव करंट अकाउंट ओपनड इन एनी बैंक, जो नॉर्मली हम ओपन करते हैं ना इंडिविजुअल का, वो होता है सेविंग्स अकाउंट. उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, फैसिलिटी सेविंग अकाउंट को नहीं मिलेगी. बैंक में जाके ये फैसिलिटी मांगो मत, हकाल देंगे. ओवरड्राफ्ट, ओडी मतलब क्या? यू डोंट हैव अकाउंट बैलेंस, योर अकाउंट बैलेंस इज 0, बट योर बैंक सेज नो इश्यूज, वी विल गिव यू अ लिमिट से 50,000. अगर तुम्हारा बैलेंस 0 भी है, यू कैन पे एनी अमाउंट अप टू 50,000, अलाउड. उस पे इंटरेस्ट ऑब्वियसली चार्ज करेंगे. एंड नेक्स्ट डे यू पे 25,000 फ्रॉम दिस अकाउंट. बैलेंस कितना था? 0. यू पे 25,000. ये आगे जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैंक को पे. दिस इज योर लायबिलिटी बिकॉज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय यू. समझ रहे हो? आई होप दिस इज क्लियर. हमने क्या क्या कंसेप्ट देखे आज? We have seen concept of capital, we have seen concept of drawings, debtor, creditor, bad debts, capital expenditure, revenue expenditure, trade discount भी देख लिया, cash discount भी देख लिया. We have seen accounting year का concept, profit, loss, income, revenue, assets. Now liabilities. ठीक है? Any doubts in these concepts we covered, you can put that in the comment section. ठीक है? Otherwise for next stream I am telling you, ये कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट में वापस पूछने वाला हूं, और आई एम गोइंग टू रेफर दिस कंसेप्ट. ये कौन से कंसेप्ट होने वाले हैं? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड कैपिटल. बिकॉज कल हम अकाउंट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसके बाद हमें देखने हैं गोल्डन रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज. तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 कंसेप्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू गो एंड रीड ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर गिवन इन चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 1. या चैप्टर नंबर 1 में सारे कंसेप्ट्स दिए बेसिक में. स्टार्ट टू एंड यू कैन रीड 11 टेक्स्ट बुक. ओके, फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स वी आर गोइंग टू गो विद द 11th syllabus only. For all those students who are looking to join 12th classes, we are going to have these 12th classes starting from 5th of July, which will be on online platform for throughout the year. And if you reside in Pune, offline classes are also there, for which you can contact me. I'll give you the details in description.
but only Pune students. Okay, those reside in nearby area of Pasha, you can join the offline classes whenever government regulations are free enough and situation in nearby area is decent. Okay, so with this we'll wrap up today's live stream. So this will be our regular time, 7 p.m. onwards. We'll have our normal live stream for over the period of next 2 weeks. Any doubts you can put in the comment section even after this live stream ends, or जो भी live stream end होने के बाद देखने वाला है, you can put that doubts in the comment section. Okay, with this we'll end this today's session.